Hi guys, welcome back to Examire. Welcome back to Logri. I get confused. So Examire is my other channel. Hello everybody, hello and namaste. I'm so sorry. मुझे पता है ये वीडियोस जल्दी आनी चाहिए थी, बट फिर भी आई नो अभी थोड़े एग्ज़ाम्स बचे हैं, तो जिनका कवर होता है उनका कवर करवा रही हूँ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अगर आप लाइव हैं, आई नो ये मैंने पहले नहीं बताया था कि आज ये सेशन होगा, बिकॉज आई वॉजंट श्योर इफ़ आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसका पूरा का पूरा सर्वे, रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करने वाले हैं. बस ये बता दो, एम आई ऑडिबल? आई नो सिर्फ 2 लोग लाइव हैं, तो एम आई ऑडिबल? इफ़ यू आर एबल टू हियर मी देन just tell me that yes, I'm audible. Yes, I'm able to see your comment, Akshat. So चलो मैं खुद ही चेक करूँ. ओके, आई एम ऑडिबल. चलो स्टार्ट करते हैं. इम्पॉर्टेंट रैंकिंग्स, सर्वेज एंड रिपोर्ट्स की ये हमारी PDF है, तो जो हम आज पढ़ेंगे बाय लॉगरी एंड एग्जामायर. तो 22nd NSO रिपोर्ट आई है. उसमें क्या बोला गया है? प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है इन 2021? 136.13 करोड़. तो आज यूनाइटेड नेशंस की भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसके अंदर कहा जा रहा है कि 2023 तक हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे और हम वर्ल्ड की, इंडिया की सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्टेट, मतलब फर्स्ट पे आ जाएंगे. किसमें? पॉपुलेशन के टर्म्स में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे हम. अभी चाइना है. ठीक है. द हाईएस्ट इंक्रीज इन सेक्स रेशियो वाज रिपोर्टेड फ्रॉम दिल्ली, चंडीगढ़ एंड अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू रीसेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, सो देयरफॉर इम्पॉर्टेंट. जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी, बहुत सारे एडिटोरियल्स आए इसके अराउंड अप्रैल में, इवन जून में भी कभी कभी इसकी बात हो जाती है किसी एडिटोरियल में, राइट. तो यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि कोविड-19 इज़ एक्सपेक्टेड टू कॉज 4.7 मिलियन फेटालिटीज़, मतलब डेथ्स हुई कितनी? 4.7 मिलियन ओनली एंड ओनली इंडिया के अंदर. ठीक है ना. जबकि इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को डिनाई करती है. इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही नंबर्स बोल रहे हैं, इतनी ज़्यादा डेथ्स नहीं हुई है इंडिया के अंदर. ठीक है ना. और क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, इंडिया वाले कह रहे हैं कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है. ठीक है ना. जो जिस वे में इन्होंने कैलकुलेट किया है, जहाँ से इन्होंने नंबर्स पिक किए हैं, वो अनऑफिशियल नंबर्स हैं. इन्होंने स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर्स नहीं पिक किए हैं. तो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कहा है कि 4.7 मिलियन, नॉट बिलियन, मिलियन, मिलियन फेटालिटीज़ इन इंडिया डेथ्स हुई हैं बिटवीन जनवरी 1, 2020 टिल December 31, 2021, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. देखो ये जो ड्यूरेशन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये याद करना ज़रूरी है. इंडिया मेंटेन्स इट्स ऑपोजिशन टू WHO मेथोडोलॉजी विद एस्टिमेटेड दैट इंडिया सॉ 1/3 ऑफ 15 मिलियन सच डेथ्स वर्ल्ड वाइड, द हाईएस्ट फिगर ऑफ एनी कंट्री. तो 15 मिलियन डेथ्स हुई हैं वर्ल्ड वाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया जो है उसकी मेथोडोलॉजी को क्वेश्चन करा है, किसकी? WHO की. ठीक है. और इंडिया की हाईएस्ट फिगर आई है, मतलब 4.7 मिलियन जो इंडिया की फिगर है, वो हाईएस्ट डेथ्स वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही हुई हैं. The cumulative excess deaths associated with COVID-19 pandemic assessed by the WHO for India are 4,74,000 of 7 lakh of I'll read that, 47,40,894. राइट. तो हमें याद रखना है कि हमारा 47 लाख 4.7 मिलियन. तो एग्जैक्ट नंबर एग्जाम में आना थोड़ा डिफिकल्ट है. ठीक है. इम्प्लाइंग दैट द WHO एस्टिमेट इज रफली 10 times ऑफ द ऑफिशियल टैली. ठीक है ना. नाउ इसके बाद यहाँ पर द गवर्नमेंट असर्टेड द WHO's पब्लिश स्टैटिस्टिक्स आर कम्प्लीटली एरोनियस. तो हमारी गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करिए. गिवन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑथेंटिक डाटा रिलीज्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया थ्रू द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, मैथमेटिकल मॉडल शुड नॉट बी यूटिलाइज टू एस्टिमेट एक्सेस मॉरलिटी नंबर्स ऑफ इंडिया. ठीक है. तो वो कहते हैं कि जो हमारा ऑफिशियल डाटा है वो इन्होंने वो वहाँ से इन्होंने डाटा पिक नहीं किया है. ठीक है ना. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो ये हमें पता होना चाहिए. WHO की 4.7 मिलियन वाला जो पॉइंट है वो हमें पता रहना चाहिए. ठीक है. आगे चलते हैं. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यहाँ पे रहेगी, बट हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये हर एग्जाम में आ ही जाता है ये वाला सर्वे. फर्स्ट फिनलैंड है. इंडिया का रैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. 136th रैंक है. 2021 में 139 था. तो 4
से हम ऊपर चले गए थोड़े न. द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स एनुअल रैंकिंग फॉर ऑफ मोस्ट लिवेबल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स फॉर 2022. अगेन ये वाला क्वेश्चन भी मतलब फेवरेट रहता है एग्जामिनर का कि कहाँ पर रहना चाहते हैं लोग. कंट्री ऑन टॉप इज वेना, ऑस्ट्रिया की है. न्यू दिल्ली हैज़ बीन रैंक्ड 112 व्हाइल मुंबई इज रैंक्ड एट 117. तो हमारी पोजीशन कराची, सिटी ऑफ पाकिस्तान, ढाका अमंग लीस्ट लिवेबल, मतलब कोई नहीं रहना चाहता वहाँ पर. ठीक है, न्यू दिल्ली का 112 रैंक है, मुंबई का 117. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंडिया हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट गोल्ड रिसाइकलर वर्ल्ड वाइड. मतलब सबसे ज़्यादा गोल्ड रिसाइकल 4th नंबर पे हम करते हैं. चाइना फर्स्ट पे आता है. ठीक है, इटली सेकंड पे आता है, यूएस थर्ड पे आता है. तो हमें इंडिया की पोजीशन याद रखनी है और चाइना फर्स्ट पे, ये याद रखना है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ये बोला है. द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज इट्स रिपोर्ट ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ओनली 6% ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोटेक्शन. अब यहाँ पे ये याद रख लो 6% इन्होंने बोला है कि सोशल कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोटेक्शन क्या होती है कि मतलब पेंशन, मेडिकल केयर, ओल्ड एज, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली, इन सब बेनिफिट, मतलब उनकी जो केयर होती है, जो उनकी स्टेबिलिटी है लाइफ में, सिक्योरिटी है, उसके बारे में बात करें तो वो सबसे मतलब 6% ही हैं. ओनली 6% ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स हैव असेस टू इट, 94% डू नॉट हैव. सो दिस इज़ अ बिग नंबर, ह्यूज नंबर, राइट. इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट रिसेंटली कंपाइल एंड रिलीज द एनुअल. देखो अब यहाँ पे ना जो सर्वे से क्वेश्चन आता है, नॉर्मली जो सर्वे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रिपोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. नंबर 1 ये क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का क्या रैंक था. ठीक है ना, ये तो बहुत ही फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन है कि बताओ इंडिया का क्या रैंक था. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि फर्स्ट पे कौन था. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो आ जाता है वो कहते हैं कि किसने रिपोर्ट बनाई, किसने इंडेक्स बनाया, किसने सर्वे किया. ठीक है ना, तो ये 3 क्वेश्चंस मेनली बनते हैं. उसके बाद इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिसेंटली कंपाइल्ड एंड रिलीज द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ऑन जून 15. तो किसने बनाया, तो हमें जून 15 से कुछ लेना देना नहीं है, हमें किस चीज़ से लेना है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स. इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने बनाया. ठीक है ना. विटनेस शार्पेस्ट राइज, इंडिया ने सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट राइज देखा एशियन कंट्रीज़ में. इंडिया विटनेस 6 पोजीशन राइज फ्रॉम 43rd to 37th रैंक. तो अब इंडिया का रैंक क्या है, 37th. डेनमार्क टॉप पर आया. ठीक है. एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट वॉज रिसेंटली released on June 14, 2022 in the light of London Tech Week 2022. अब इसमें केरला जो है has been ranked as the at first position in India. अब देखो किसी स्टेट का रैंक इतना अच्छा आया है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हैज़ रीच अप टू 69.7. तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है कि 69.7 नंबर है. ठीक है. 2015 to 2019, ड्यूरिंग 2015 to 2019 डाटा वॉज रिलीज बाय डेमोग्राफिक सर्वे. इंडियाज लाइफ expectancy at birth has reached up after 10 years. However, it is still below the average global average of 72.6. The National E-Governance Service Delivery Assessment Report, Meghalaya and Nagaland were ranked at top in state portals and overall compliance of over 90%. मतलब E-Governance मतलब ऑनलाइन कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रही हैं स्टेट्स, तो उसमें मेघालय और नागालैंड जो है वो रैंक्ड एट टॉप इन स्टेट पोर्टल्स विद ओवरऑल कंप्लायंस ऑफ 90%. तो ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश हैड अ कंप्लायंस रेट ऑफ 85% अमंग रिमेनिंग स्टेट्स. केरला टॉप. अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन टॉप किया, रिमेनिंग स्टेट्स में केरला ने टॉप किया. तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. रिमेनिंग स्टेट्स में केरला ने टॉप किया. उसके बाद यहाँ पर अमंग सर्विस पोर्टल फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट, मेघालय, त्रिपुरा वर रैंक द हाईएस्ट. नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, त्रिपुरा ने किया. रिमेनिंग स्टेट्स, ओवरऑल स्कोर ऑफ तमिलनाडु हाइक द मोस्ट इन 2021. आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरला, उड़ीसा एंड गोवा ऑल्सो इम्प्रूव कंप्लायंस. पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु आर द लीडिंग स्टेट्स विद कंप्लायंस. ठीक है. वर्ल्ड बैंक रिड्यूस्ड इट्स रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फोरकास्ट फॉर ईयर 2022-23 फॉर इंडिया फ्रॉम 8% to 7.5% इन द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट. ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि वर्ल्ड बैंक, वैसे तो जीडीपी अगर आप देखोगे ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ हर कोई अपनी अपनी चेंज कर रहा है इंडिया के लिए. उसका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेड 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स. इसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है. ये हमने पढ़ा भी था एग्जाम आयर पर. ये इंपॉर्टेंट है सिंस बहुत ही रीसेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये भी.
In the index, Tamil Nadu secured first rank in the category of large states. In the category of small states, Goa has been ranked first. तो large states में तमिलनाडु फर्स्ट है, स्मॉल स्टेट्स में गोवा फर्स्ट है, ठीक है. यूटीज़ के अंदर जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट है, ठीक है. आगे चलेंगे. 2022 इन्वायरमेंट. अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर दोबारा इंडिया को सबसे लास्ट रैंक मिला है. 2022 Environmental Performance Index EPI ranking 180 countries on 40 performance indicators in 11 issue categories. अब यहाँ पे 180 countries थी. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो रैंक है इंडिया का वो 180th रैंक आया है, बॉटम पे है सबसे ज़्यादा. इंडिया ने स्कोर कितना किया? 18.9. देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं. उसके बाद पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड एट 176 पोजीशन. ये हमारे नेबर्स हो गए इसलिए हम पढ़ रहे हैं. टॉप पे कौन आया? डेनमार्क फर्स्ट पे आया और स्कोर कितना है? 77.90, ठीक है ना. उसके बाद आगे चलेंगे. एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स वाज रिलीज्ड. एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स वाज रिलीज बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन. इंडिया इज द थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन द 2022 रैंकिंग्स विद 71 इंस्टीट्यूट्स मेकिंग इट टू द लिस्ट. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी कितनी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस लिस्ट में आई हैं. 71 आई हैं. तो टॉप पे जो सब इंडिया की है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. द टू यूनिवर्सिटीज़, तो ये बाकी सारा इन्होंने मेंशन किया हुआ है. अब यहाँ पे टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी है ये मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे मैंने मेंशन करी थी. द टू टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑन दिस लिस्ट आर फ्रॉम चाइना, तिशुगुआ एंड पेकिंग यूनिवर्सिटी होल्डिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेसेस रिस्पेक्टिवली. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. हमारी टॉप यूनिवर्सिटी कौन से, कितनी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की है, वैसे टॉप पे कौन है वो हम याद कर लेंगे. डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिलीज थर्ड एडिशन ऑफ स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021. आजकल स्टार्टअप्स जो है, आप लाइव नहीं हेयर कर पा रहे हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. हमारी टॉप यूनिवर्सिटी सुन तो पा रहे हो यार. चलो उसमें स्टार्टअप रैंकिंग जो है 2021. स्टार्टअप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर एंटरप्रेन्योर्स, गुजरात एंड कर्नाटका एमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मेंस अमंग स्टेट्स इंक्लूडिंग एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है. तो गुजरात और कर्नाटका बेस्ट है. मेघालय वॉज रैंक फर्स्ट अमंग यूटीज. गुजरात हैज़ बीन रिकग्नाइज एज द बेस्ट परफॉर्मर फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर. केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना वो टॉप परफॉर्मेंस अमंग स्टेट्स, राइट. Guys, please tell someone, are you able to hear me? Because I am able to hear myself. Hi, anyone, please tell me, am I audible? Because there's some people who are telling that I'm not audible. Please tell me, am I audible? कम आ रही है आवाज़? ओके फाइन. अब आ रही है आवाज़? ओके स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय द यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स. एज पर रिपोर्ट लीगलाइजेशन ऑफ कैनबिस हैज़ बीन इंक्रीज इन इट्स. शी इज़ नॉट एट ऑल ऑडिबल. यस, आवाज़ कम आ रही है. ओके स्टार्ट करते हैं. आई एम ऑडिबल. चलो अब आवाज़ आ रही है तो बता दो, ठीक है. चलो चलते हैं. थैंक्स हसन गाटू, थैंक यू सो मच. चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पे वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, ठीक है. थैंक यू गुलाम खारुल बशर. नाउ कैनबिस, तो वो कह रहे हैं कि लीगलाइजेशन, एज पर रिपोर्ट लीगलाइजेशन ऑफ कैनबिस हैज़ इंक्रीज इट्स डेली यूज एंड रिलेटेड हेल्थ इम्पैक्ट्स, ठीक है. ये हुआ है. द रिपोर्ट हाईलाइट्स द एक्सपेंशन ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स इन न्यू मार्केट्स, इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ड्रग्स की जो इंटेक है वो बढ़ गई है, ठीक है. और यहाँ पे अराउंड 284 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 एंड ड्रग्स इन 2020 ड्रग यूजेस विटनेस एन इंक्रीज ऑफ 26% एज कम्पेयर टू लास्ट डिकेड. Now this is important, right? Thank you Chetan, thank you. Add on, I want to tell you, this is some gyan that I'm going to give you. Thailand made it legal to cultivate and possess marijuana, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो पॉट स्मोकिंग है वो इन्होंने वो लीगल नहीं करी है, बट वैसे इन्होंने लीगल कर दिया है, मतलब खाना उसको,
ठीक है ना, थाईलैंड वालों ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। ईज़ ऑफ डूइंग, अब ये सर्विस से रिलेटेड नहीं, आई थॉट कि जो रिलेटेड न्यूज़ है वो मैं कवर करवा देती हूँ। ओके, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया 63rd रैंक है, फर्स्ट न्यूजीलैंड है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब एक कंट्री के अंदर कोई बाहर से आ रहा है या वैसे भी कोई है तो कितनी ईजिली आप बिजनेस कर सकते हो, उसकी बात कर रहे हैं, राइट। उसके बाद चलेंगे QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023। लंदन हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट सिटी। इंडिया का कौन सा सिटी आया? इंडिया का सिटी जो आया है वो है मुंबई, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ बीन रैंक्ड 103rd, तो मुंबई जो है वो 103rd, मतलब लोग पढ़ने के लिए कौन सा सिटी प्रेफर करते हैं वो। लंदन इज़ द बेस्ट वन। मुंबई इज़ फॉलोड बाय बेंगलुरु, 114 रैंक आया है इसका, ठीक है। चेन्नई और दिल्ली ने भी जगह बना ली है, तो तुम याद रखो कि मुंबई टॉप पर है, उसका क्या रैंक है, ठीक है। और वैसे कौन सी सिटी है जो टॉप पर है वो है लंदन, ठीक है ना, लंदन। आगे फैक्टर्स इंक्लूड स्टैंड ऑफ यूनिवर्सिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये सब कुछ, ये हमें याद नहीं करना, ये जस्ट टू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैड एडेड। उसके बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिलीज द बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP 2020। अब देखो यार, इसकी ना फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों याद कर लेना, कोई भी पूछ सकता है। उसके बाद एंड प्रेजेंटेड असेसमेंट रिपोर्ट, ये मैं कौन से चैनल पे कर रही हूँ यार, लॉगरी पे ही कर रही हूँ, तो उस पर डालनी थी। एंड प्रेजेंटेड असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, स्टेट्स लाइक गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, यहाँ पे सॉरी पंजाब की स्पेलिंग गलत है, कर्नाटका, तमिलनाडु हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज टॉप अचीवर्स इन द रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो गुजरात ने टॉप किया है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड अचीवर्स हैं, ठीक है ना, टॉप पे ये है। उसके बाद अचीवर्स हैं असम, ये सब है एस्पायर्स, तो ये कैटेगरीज हैं डिफरेंट। जब हम इसकी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान की, मतलब बिजनेस करने के लिए कितने रिफॉर्म्स लेकर आई है स्टेट, उसकी बात कर रहे हैं। नीति आयोग पब्लिश इस रिपोर्ट टाइटल हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप decarbonization in India. This report has been prepared in collaboration with Delhi-based think tank RMI India. Now अब क्या है कि वो रिपोर्ट का नाम दे सकते हैं कि ये रिपोर्ट बताओ किसने पब्लिश करी है, तो मैं बताते हैं नीति आयोग ने, किसके साथ मिलकर, RMI इंडिया के साथ मिलकर, ठीक है। अब यहाँ पे इन इट रिपोर्ट नीति आयोग हैज़ रिकमेंडेड टू रिड्यूस और एग्जेम्प्ट द GST एंड कस्टम ड्यूटीज ऑन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू बूस्ट द प्रोडक्शन इन इंडिया। नाउ व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन? सो बेसिकली जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करी जाती है तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो उसके अंदर जब हाइड्रोजन, तुम ये सब छोड़ो कि क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, तो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर जो मतलब वाटर यूज़ करा जाता है इसको बनाने के लिए, और वैसे फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करे जाते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करे जाते हैं तो ऑब्वियसली वो पोल्यूशन करते हैं। जब वाटर यूज़ किया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है ना, जब वाटर को यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर अब ये क्या कह रहे हैं कि GST एंड कस्टम ड्यूटीज़ जो ग्रीन हाइड्रोजन पर है उसको एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, मतलब इसके ऊपर GST नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इट ऑल्सो प्रपोज टू सेट अप ग्रीन hydrogen corridors as well as offers grant to startups that are working on green hydrogen, ठीक है ना। तो कॉरिडोर्स होने चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन के, जो स्टार्टअप्स ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं उनको ग्रांट्स भी ऑफर करने चाहिए। तो ये दिमाग में रख लो, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्या आता है, एक तो टैक्स मत लगाओ उनके ऊपर, ठीक है, एक उनके लिए उनको ग्रांट्स दो जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, तो ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं। अकॉर्डिंग टू इट गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन ब्रिंगिंग अ कॉस्ट रिडक्शन पाथवे। अब अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर ही रहे हैं तो रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़, अगेन सर्विस इंडेक्सेस से नहीं रिलेटेड है, ये बस मेरा मन किया तो मैंने ऐड कर दिया, मुझे याद आ गया हाइड्रोजन। तो इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कमीशन इन असम, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ये स्टार्ट किया है, जौहरत में है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज स्टेट से रिलेटेड, और फर्स्ट इंडिया का प्लांट है ग्रीन हाइड्रोजन का, जौहरत असम में। ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज हैज़ कमीशन द कंट्रीज ओनली प्योर green hydrogen pilot plant with an installed capacity of 10 kilograms per day at its Johar pump station in Assam. Okay, so this is very very important. उसके बाद चलेंगे द एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स launched by Knight Frank, which is a global property consultant. In the index, 4 Indian cities, Bengaluru, Hyderabad, Delhi and Mumbai, have been ranked among the top 20 sustainable cities. India has been topped by Singapore. Index has been topped by Singapore. I'm sorry guys, इतनी रात हो गया तो अब मेरे को थोड़ा अलग दिख रहा है, ठीक है। तो ये cities made it to 20 sustainable cities of the world, of Asia, not the world. And Singapore is on the top. Okay, Department of School Education and Literacy of Ministry of Education released the Performance Grading Index of Districts report of the year 2018-19, 2019-20.
अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट रैंक्स दिए हुए हैं और उन रैंक्स को ग्रेड्स दिए, मतलब उत्कर्ष बोला गया कि सेकंड हाईएस्ट ग्रेड पे जो सिटीज़ या स्टेट्स को प्लेस किया गया है. तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान नेमली सीकर, झुंझुनू एंड जयपुर अचीव द सेकंड ग्रेड, मतलब उत्कर्ष ग्रेड मिला उनको. उत्कर्ष ग्रेड मतलब एक बता दिया कि ये सेकंड हाईएस्ट है. जैसे अगर हम फर्स्ट को कहते हैं कि फर्स्ट आया तो गोल्ड मेडल, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो और सेकंड आया तो सिल्वर मेडल, तो यहाँ पे जो सिल्वर है उसको क्या नाम दे दिया, उत्कर्ष. तो सेकंड राजस्थान की तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को सेकंड ग्रेड मिला है जिसका नाम उत्कर्ष है. क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी अभी आई थी ये न्यूज़ के अंदर. रोड accidents in India 2020, it has been highlighted that there have been a sharp decline in road accidents in 2020 as compared to 2019. The report has been released by Ministry of Road Transport and Highways. According to the report, compared to the previous year's average, total road accidents decreased by, now this is important, कितने से decrease हुए, 18.46% से रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 ये रिपोर्ट थी. तो और शार्प डिक्लाइन आया है रोड एक्सीडेंट्स में. द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स ऑल्सो डिक्रीज बाय 12.84% एंड नंबर ऑफ इंजरीज ऑल्सो डिक्रीज. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वन एंड दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसका परसेंटेज आप याद करोगे. How is it, guys? I've worked really hard on this. How did you find it? Like, is it good? Is it workable or not? Should I make more PPTs like these? Or PDFs, sorry, not PPTs. UNDRR Global Assessment Report. Now, UN Office for Disaster Risk Reduction. Now, you need to know the full form also. क्योंकि कभी कभी वो फुल फॉर्म में पूछ लें, कभी कभी UNDRR पूछ लें, ठीक है ना. तुमने पढ़ा हुआ है दोनों, so you should know. Has released GAR 2022, that is Global Assessment Report. Now, as per GAR 2022, यहाँ पे 20, the planet will face 560 disasters annually. Now, this is important. कितने disaster कह रहे हैं कि हर साल planet 560 disasters देखेगा, ठीक है ना, फेस करेगा. Now, nations which are having higher share of population living below the national poverty line may face the brunt of disasters include India. ठीक है ना, जिनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है उनमें से इंडिया भी एक है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद द नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2021 report was released by the Union Ministry of Education. National Achievement Survey is a national level assessment survey conducted to evaluate the progress and learning achievement of school students. Right? क्या कहते हैं इसमें, पंजाब was the best performer in India across all grades and subjects. The subject performer in best performer in class 8th and 10th was of Delhi. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. पंजाब ने सभी ग्रेड्स में टॉप किया, दिल्ली ने 8th और 10th में दिया. ठीक है, और ये कौन सी सर्वे है हमारी, NAS 2021. अब इसके अंदर ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ईयर्स. ओके, येस, दीज क्वेश्चंस कैन कम. क्वेश्चन पेपर अभी बन गया है तो क्या हुआ, ये 2021 और 2022 के सर्वेज हैं, मोस्टली 2022 के सर्वेज हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स. WAF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट 54th प्लेस. 2019 में इंडिया 46th प्लेस पे था, टॉप पे जापान है. द स्कोर ऑफ इंडिया इज़ 4.2. अब यार कभी कभी स्कोर भी पूछ लेते हैं तो वो भी याद करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टाइटल्ड प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल ड्यूरिंग द कोविड-19 pandemic, a new billionaire emerged every 30 hours. ठीक है ना, हर 30 hours में एक न्यू बिलियनर emerge हुआ. While a million people might slip into extreme poverty every 33 hours. Now this is a big number. A million people might slip into poverty every 33 hours during this same time period. Now this is important, ठीक है ना, a new billionaire every 30 hours and million people slipping into extreme poverty every 33 hours. The report was released at the World Economic Forum, Davos. Now, you should know Telangana got a lot of investments from this World Economic Forum. Telangana as a state got a lot of investments. So, this is something that might be a question. आई नो इसकी सेटिंग थोड़ी गलत हो रखी है, बट करने दो, ये मुझे ये था कि मैं करवा दूँ बस, ठीक है ना. डॉक्टर बिबेक देब्रॉय, चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, रिलीज द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट विच वॉज रिटन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट दैट वॉज रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन 18 मई 2022. अब यहाँ पे जो हमने ऊपर पढ़ा ना, इसके अंदर बस ये पता होना चाहिए किसने कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करी है, ठीक है ना. इसमें नंबर्स और रैंकिंग्स का इतना वो नहीं है. According to the World Economic Situation and Prospects report that was released by United Nations on 18 May 2022. अब हमें पता होना चाहिए कि United Nations ने रिपोर्ट करा है ये
The global economy this year is expected to grow by only by 3.1%. तो ग्लोबल इकॉनमी में कितना ग्रोथ आएगा? 3.1% का. इंडिया का कितना बताया? द अर्लियर प्रिडिक्शन वॉज 4.0%. ठीक है, पहले क्या था? 4.0% का प्रिडिक्शन था, बट फिर क्या हुआ? यूक्रेन और रशिया लड़ने लग गए, तो वो कहते हैं कि अब 3.1 ही होगा. दिस रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स ऑफ द UN. Okay, again this is important. Now health minister release national family health survey. अरे यार ये तो बहुत important है, ठीक है ना. तुम कहोगे हर चीज़ important बोल रही हूँ, but yes this is important. Now national average of underage marriage has come down. ठीक है ना, तो मतलब जो underage marriage होती थी वो पूरे इंडिया में थोड़ी कम हो गई है. लड़कियों की शादी जो है उम्र से पहले करनी बंद कर दी है. बंद तो नहीं करी है, अभी हो रही है, बट कम हो गया है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू NFHS 5, 23.3% of women surveyed got married before attaining the legal age of 18 years. इंडिया में जो लीगल एज है वो 18 years है. ठीक है ना, फ्रॉम 26.8% इन NFHS 4. ठीक है ना, तो 23.3% वुमेन ही है जो 18 ईयर्स से पहले शादी हो रही है. त्रिपुरा हैज़ सीन द लार्जेस्ट जंप इन मैरिजेस अंडर द लीगल एज ऑफ 18 ईयर्स फॉर वुमेन. सो त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा बड़े हैं चाइल्ड मैरिजेस, एंड बिगेस्ट गेन्स इन इम्प्रूविंग लीगल मैरिज हैव बीन सीन इन छत्तीसगढ़. तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने इम्प्रूव किया, किसने कम की चाइल्ड मैरिज? छत्तीसगढ़ में कम होने को मिली, पर त्रिपुरा में इंक्रीज आया. ठीक है ना, और 23.3% women surveyed got married before attaining the legal age of 18 years. लो तुम्हारे लिए मार्क कर देती हूँ. ठीक है, ये लो ये. ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये. ठीक है, अब अगर तुम तुक्के मारने पे आओगे तो मिलेगा अरे यार छत्तीसगढ़ थोड़ी इतनी ज़्यादा एडवांस स्टेट नहीं है, तो तुम मार्क नहीं करके रहोगे कि इसमें कम नहीं हुए होंगे, पर उसमें कम हुए हैं. ठीक है, द नॉलेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कॉन्डम्स और ये सब कुछ. ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल इन इंडिया, बट द यूज़ ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फैमिली प्लानिंग इज ओनली 56.4%. ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव 56.4% ही यूज़ हो रहे हैं. India's total fertility rate, now this is a very very important pointer. ठीक है ना, total fertility rate has declined from 2.2 in 2015-16 to 2.0 in 2019-2021. This is a very very important pointer. मोस्ट एक्सपेक्टेड आई सपोज इन फर्टिलिटी. यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो या तो चाइल्ड मैरिज पे आएगा. ज़्यादा एक्सपेक्टेड फर्टिलिटी रेट से है, चाइल्ड मैरिज से कम है, बट आ भी सकता है. इंडिकेटिंग द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स रिवील द रिपोर्ट ऑफ द 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5. Now, total fertility rate is average number of children that would be born to a woman if she were to live to the end of her childbearing years and give birth to children in alignment with the prevailing age-specific fertility rate. So, एक woman के कितने normally बच्चे होंगे वो बताते हैं. 2.2 मतलब पहले कितने थे? पहले 2.2 थे और अब कितने? 2 ही हैं सिर्फ. ठीक है, we know. The 2022 Global Report on Food Crisis highlighting acute food insecurity globally. Now this is very important, keeping in mind the current situation of Ukraine-Russia war. We know कि globally food crisis की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं. ठीक है, इंडिया ने भी वीट पे prohibition लगा लिया, वीट एक्सपोर्ट पे. Report published by Global Network Against Food Crisis. Around 193 million people in 53 countries or territories experience acute food security at crisis or worse levels in 2021. तो 193 million. तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेड ये है कि किसने लिखा, अराउंड 6 लाख पीपल इन यूथोपिया, साउदर्न मैडागास्कर, South Sudan and Yemen are classified in the most severe phase of acute food insecurity. Now this is again important. India ranked 150 on the world. अरे यार ये मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है सच्ची. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखो, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस, ये लिवेबल सिटी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये आ ही जाते हैं. 150 रैंक है इंडिया का. दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय रिपोर्टर्स स्कैन्स फ्रंटियर्स. ठीक है, स्लिप्ड 8 पोजीशन फ्रॉम 142 to 150th. ओके, टॉप पे कौन आया? नॉर्वे. लास्ट में कौन आया? नॉर्थ कोरिया. now 2023 की rankings है. QS World University Rankings was released by QS Kakireli Simons, global higher education think tank and compilers of the world's most consulted university ranking portfolio. Right, now this is MIT is on the top. Okay,
and this is the university on the top, but we are concerned more with India. Just like last year, the top 100 list doesn't feature any Indian university. So top 100 में कोई भी India की university नहीं है, ये भी important pointer है. And thus is for the 6th year straight that IISc Bangalore rank 155, IIT Bombay rank 172, and IIT Delhi 174 are the only 3 Indian universities that bag the spot amongst the top 100, right? So India की top में कौन आई है? IISc Bangalore 155 रैंक है. टॉप 100 में इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आई है, ठीक है. और टॉप पे ये MIT है वैसे वर्ल्ड में. ओके, the state energy and climate index, since climate is a very important issue, so thereby this is important. किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने, ठीक है. और वो इंडिया का क्या है? थिंक टैंक, ठीक है. ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का. इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडेक्स दैट एम्स टू ट्रैक द एफर्ट्स मेड इन द एनर्जी एंड क्लाइमेट सेक्टर बाय द स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया, राइट. क्या है? ट्रैक करने के लिए एनर्जी और क्लाइमेट सेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं यूटीज ऑफ इंडिया, स्टेट्स और यूटीज. टॉप इन स्टेट्स गुजरात, टॉप इन स्मॉलर स्टेट्स गोवा, टॉप इन यूटी चंडीगढ़. मतलब आई हैव बीन वेरी स्पेसिफिक. अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड वर्किंग पेपर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया हैज ड्रॉप फ्रॉम 22.5% in 2011 to 10.2% in the pre-COVID year of 2019. This is a very important thing. एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब जिसको खाना भी नहीं मिल रहा, बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं पूरी हो रही है, उसके बारे में. द लेटेस्ट सीरीज ऑफ इन्वायरमेंटल इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन climate change, IPCC. Now this is very important. 6th assessment report has highlighted that without immediate emissions reduction across all sectors, it would be difficult to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. The report also stated that to keep the temperature checked to 1.5 degrees Celsius, the global emission of greenhouse gas has to peak before 2025, and by 2030 it must be reduced by 43%. So these numbers are very, very important. The report highlights that even if greenhouse gas emissions is checked, it is possible that temperature would temporarily exceed the threshold, but it could return below the mark by this century's end. The report highlights that by 2050, all unabated coal-fired power plants need to be shut down, or else it would be difficult to maintain the global temperature rise limit to 1.5 degrees Celsius. The global use of coal needs to fall by at least 95% by 2050. So this is very important. Okay, now 3 Indian women, Kiran Majumdar Shaw of Bicon, Falguni Nair of Nykaa, and Radha Vembu of Zoho have been featured in the latest Hurun Richest Self-Made Women in the World 2022. Hurun list of women self-made billionaires. Self-made billionaires, guys. This is a very important list. Again, Kiran Majumdar Shaw, Falguni Nair of Nykaa, Radha Vembu of Zoho have been featured in Hurun Richest Self-Made Women list. Okay, now women empowerment is on the rise and you need to know about it. Wu Yazjun, a Beijing-based property developer, has topped this list. CEO and founder of Nykaa, Falguni Nair, with $76 billion, has been placed in top 10 richest list. She overtook billionaire Kiran Majumdar Shaw to become India's richest self-made woman. She was also featured in first place in Hurun's list of top 10 new faces. Now this is very important. UNEP, now UNEP Annual Frontier Report 2022, which is titled as Noise, Blazes and Mismatches. Dhaka has been ranked as the noisiest city in the world, which is followed by Moradabad of Uttar Pradesh, right? Because we are on the second, we need to know who is on the top, and we are on the second, Moradabad, UP. 5 Indian cities have been ranked in this list of being among the noisiest cities in the world. This is Jaipur, Asansol, Jaipur, Kolkata, New Delhi and Moradabad. Okay, fine. Jaipur, New Delhi, Kolkata and Asansol. Kolkata is digestible, like it is very, very noisy on roads especially. Dhaka has been ranked as the world's noisiest city, with Islamabad of Pakistan ranked 3rd. We are on 2nd, Moradabad, UP. Irbid, Jordan has been ranked as the world's quietest city. I would like to visit the city. I want to feel the quietness. According to the newly released National Tuberculosis Prevalence Survey 2019-2021, the highest incidence of pulmonary tuberculosis cases across the country were recorded in Delhi, and the lowest were recorded in Kerala. Now this is very important. Delhi के अंदर सबसे ज़्यादा cases आए हैं और सबसे कम कहाँ पर आए हैं? केरला के अंदर, ठीक है.
In 2021, air pollution continued to reach unhealthy levels according to a report on world air quality, which was prepared by IQAir, a Swiss organization. Also, for the fourth year running, New Delhi remained the world's most populated capital city, not the world's most populated city polluted, not populated. I'm sorry, polluted city. It is polluted capital city, right? Capital city, most polluted capital city of the world is New Delhi. Okay, so this report was published by IQAir, World Air Quality. Moving on, next, 35 Indian cities have been listed by the index under the worst air quality tag for 2021. Bhiwadi, Rajasthan topped this list and was followed by Ghaziabad, Uttar Pradesh. तो गाजियाबाद तो दिल्ली का पड़ोसी ही है. वी डेम इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 autocratization changing nature. Now this is again important, what discussed a lot in editorials. तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इंडिया इज़ अमंग द टॉप 10 ऑटोक्रेटाइजिंग. ऑटोक्रेटिक क्या होता है, ऑटोक्रेटिक उसमें बोल रहा है कि एक पर्सन है जो सारी कंट्री को चला रहा है, ठीक है ना. तो इंडिया को क्या कह रहे हैं, ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटाइजिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद एल सल्वाडोर, टर्की, हंगरी. नाउ आई वांट टू टेल यू, एल सल्वाडोर वाज इन न्यूज़ बिकॉज इसने बिटकॉइन को अपना, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बेसिकली अपना, चेक कर लेना, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को इसने अपना करेंसी बना लिया, नेशनल करेंसी बनाया है बिसाइड US डॉलर. So India is among the 10 autocratizing countries of the world. Since last year, India is being classified as an electoral autocracy. मतलब elected है but जो rule कर रहा है वो autocracy है वहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, इंडिया में. Now this is important. The report noted that level of democracy enjoyed by average global citizen in 2021 is down to 1989 levels. तो 1989 में जितनी डेमोक्रेसी enjoy करता था एक citizen, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक citizen, वो उतना लेवल आ गया है 2021 में. Again, this is a very important point. उसके बाद अकॉर्डिंग टू मरकॉम इंडिया रिसर्च, इंडिया इंस्टॉल्ड रिकॉर्ड 10 गीगावाट्स ऑफ सोलर कैपेसिटी इन कैलेंडर ईयर 2021, द हाइएस्ट इन अ सिंगल ईयर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. According to the report, India's cumulative solar installed capacity at around 49 gigawatts at the end of December 2021. As of December 2021, Rajasthan, Karnataka and Andhra Pradesh were the top 3 states in terms of cumulative large-scale solar capacity, accounting to 50% of country's installation. तो यहाँ पर राजस्थान, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को मिलता है सारा अवार्ड. राजस्थान led capacity addition 2021 with 4.5 gigawatts of solar capacity installed. Global Gender Gap report by World Economic Forum, India ranked 140th out of 156 countries. India has managed to close 62.5% of its gender gap till date. In 2020 report, it was ranked 112th among 153 countries. Niti Aayog has started to make national gender index. Hurun report on dollar millionaires. In India, the largest number of dollar millionaires are in Mumbai, Delhi and Kolkata. Earlier we read about Kiran Majumdar, Falguni Nayyar under this report. IPCC is an intergovernmental body of United Nations. It is responsible for advancing knowledge on human-induced climate change. Okay, it talks about climate change. IPCC was established in 1988 by World Meteorological Organization. It is headquartered in Geneva, Switzerland. It comprises of 195 member states. This is important, guys, because we read about IPCC. Okay, the report claims that sea levels rise will endanger Mumbai while storms will threaten Kolkata. Now, this is a very important news. Sea level rise कहाँ पर होगा, मुंबई के अंदर होगा, और storms कहाँ पे threaten करेंगे, कोलकाता के अंदर. Now the next thing is, okay, we are close to completing this video. I hope you've liked the video and you've subscribed to the channel. Okay, US Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center, India's total IP score. IP is intellectual property, that is number of people who went and registered either there's some basically patents or some work that they consider that people should not copy, right? So it can be a process to make a medicine or anything, to do something, right? Score has risen from 38.4% to 38.6%. This is important, and the country is now ranked at 43 out of 55 countries on the International Intellectual Property Index. USA is on the top. The Economic Intelligence Unit released the Democracy Index Report 2021. Norway topped the index. The country scored 9.75. India ranked 46 in the index. The overall score of India is 6.91. World Justice Project WJP Rule of Law Index 2021, Delhi University. Important question. Top is Denmark. India is on 79th rank.
As per National Crime Records Bureau (NCRB) data, the first pandemic year 2020 witnessed the highest number of suicides among unemployed in recent past. Okay, World Press Freedom Index 2021, India ranked 142 in the index. The Ministry of Environment, Forest, Climate Change released the State of Forest Report 2021. It is called the ISFR 2021. This is very, very important. We have seen questions in the past from this very report in the coming, like in the previous papers of this year 2021. Last month we saw questions. The report says that there has been a continuous growth of forest cover in India. मतलब इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना. उसके बाद has been a continuous growth of a forest cover in India. The current forest cover of India is so and so. You can make it, note it down. Around 21.71% of land area is under forest cover. In 2019, it was 21.67. So this is also important. Now about the states, Telangana has shown the highest increase in forest cover of all the states. This is important. The states with states with forest loss were Manipur, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Meghalaya. So this is again very important question. Now, Henley Passport Index 2021 was recently released. Now, this is 2022. I said 2021. I'm sorry. Henley Passport Index 2022 was recently released. The latest edition shows record-breaking levels of travel freedom for top-ranking countries. Japan and Singapore are on the top. Passport holders of two Asian nations, Japan and Singapore, can now enter 192 destinations worldwide visa-free. Okay, Afghanistan has been listed at the bottom of this index. India is ranked 83rd position पे. India 2021 it was ranked at 90th position. Now India has access to 60 countries without prior visa. Let's find it out and let's travel. Okay. Copernicus Climate Change Service, which is European Union program, the report found that 2021 was the 5th hottest year in the on Earth. Okay, hottest year. Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievement ARIIA 2021 award list was released. Now what it says, top position was achieved by IIT Madras. It topped the ranking as a most innovative educational institution in India in the technical category. So it was in the technical category. IIT Madras won this recognition for the 3rd consecutive year. Institutes which are among the 10 institutes include IIT Bombay, IIT Delhi, Roorkee, Kanpur, IIT Kharagpur, Indian Institute of Science and IIT Hyderabad. Minister of State for Education Dr. Subhas Sarkar released the Atal Ranking of Institutions on Innovation list. Okay, fine. So this IIT Madras thing is very important. Niti Aayog released its 4th health index titled as Healthy States Progressive India. Niti Aayog prepared this report in collaboration with Ministry of Health and Family Welfare as well as with the technical assistance from the World Bank. According to Niti Aayog's health index, Kerala has emerged as a top performer with respect to overall health. Now this is very, very important. So Kerala is on the top. Moving on, now moving on, performance among larger states. On the other hand, Uttar Pradesh has been ranked the last. Okay, fine. This is important. Uttar Pradesh last पे है, तो ये first और last याद रखना पड़ेगा. Central government issued Good Governance Index 2020-21. The index has been prepared by Department of Administrative Reforms and Public Grievances. Gujarat, Maharashtra, Goa have topped the list. Uttar Pradesh has secured the top position in commerce and industry sector. Index on Foundational Literacy, Numeracy, West Bengal has topped the chart in large states category. The Economic Intelligence Unit released Cost of Living Index 2021. ठीक है, कौन सा शहर है जो सबसे महंगा है? According to the report, Tel Aviv of Israel is the most expensive. Israel के अंदर जो city है is the most expensive city in the world. 2020 Paris was the most expensive city. Niti Aayog launched Sustainable Development Goals Urban Index and Dashboard 2021. Shimla has topped the list of cities by scoring highest on the index. Coimbatore and Chandigarh have been ranked at 2nd and 3rd. Bottom urban areas in the index are Faridabad, Kolkata, Agra, Kohima, Jodhpur, Patna, Guwahati, Itanagar. You remember Shimla because top is what is more expected. German Watch, in collaboration with Climate Action Network and New Climate Institute, published Climate Change Performance Index 2022. Now this is very, very important. Let me tell you. CCPI finds that major emitting economies which announced their net zero emission release targets poorly in climate change performance over 2021. India maintained
maintained its 10th rank. India continued to be among top performing countries within G20. United States have been ranked at 55th position among 66 countries. China ranked 37th. So India's position in US is very important. Again, China being a neighborhood country is important. The inaugural Global Drug Policy Index was released by Harm Reduction Consortium. In this index, Norway, New Zealand, Portugal, the UK and Australia are the 5 leading countries with respect to humane and health-driven drug policies. Lowest are Brazil, Uganda, Indonesia, Kenya, Mexico. इंडिया का स्कोर याद कर लो यार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. ओवरऑल स्कोर कितना है इंडिया का? 46. ओके. ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स इज डाटा ड्रिवन एनालिसिस ऑफ ड्रग पॉलिसी एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. मतलब ड्रग्स को कैसे डील कर रहे हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश इट्स रिपोर्ट टाइटल मिशन 2070, a Green New Deal for Net Zero India to provide a roadmap for India's energy transition. The report was published in the backdrop of India's target to achieve net zero emissions by 2070. So this is a very, very important question कि कब तक अचीव करना है. 2070 तक net zero aim कर रहा है इंडिया. This target was committed by Prime Minister Narendra Modi at COP26 Global Climate Summit in Glasgow. Now this is an important question. COP26 कहाँ पर हुआ है? Glasgow में हुआ है. किसने कमिट किया है? हमारे प्रधानमंत्री Prime Minister Narendra Modi. At the summit, PM Modi also committed to bring non-fossil energy capacity of India to 500 gigawatts by 2030. Important. To lower carbon intensity to 45% by 2030. Important. To reduce 1 billion tons of carbon emissions out of total projected emission by 2030. You need to remember the numbers as well as the years. To fulfill 50% of energy requirement using renewable waste by 2030. Important. The logistics ease across different states 2021 index was published by Ministry of Commerce and Industry. Gujarat has stopped Public Affairs Center on Governance Performance. Kerala, Tamil Nadu and Telangana have emerged as the toppers. Saying religious freedom conditions in India had significantly worsened in 2021. The United States, now this is very, very important. Again, this was discussed a lot in the newspaper in the previous month. So important. So what is the point? Saying religious freedoms conditions in India had significantly worsened in 2021. The United States Commission on International Religious Freedom. Now this entire thing is very, very important. Okay. A bipartisan independent body recommended for the 3rd year in row that India is a country of concern. India is a country of particular concern. Okay, CPC, the category of governments performing poorly on the religious freedom criteria. This entire, each and every line has a question in it. This is very, very important. Other countries recommended for CPC designation were Afghanistan, Nigeria, Syria, Vietnam. USCIRF recommended that the State Department redesignate Myanmar, China, Eritrea, ईरान. ठीक है, ये सब है. इंडिया का तुम याद रखना है, इंडिया का बहुत इशू भी हुआ था. उन्होंने कहा था ये क्या है, इंडिया को ऐसे बोली जा रहे हैं एंड ऑल दैट. ठीक है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 which is prepared jointly by Irish Aid Agency called Concern Worldwide and German organization called Welt Hunger and released on so and so. The index termed the hunger level in India is alarming. In the index, India has been placed 101st position out of 116. Okay. In 2020, India was positioned 94th position. China, Brazil, Kuwait shared the top rank. तो ये टॉप वाला और अपना रैंक याद रखना है. As per Food Safety and Standards Authority of India study, India is all set and is on the track to become industrial trans fat free by 2022. Again important, trans fat वो गंदे वाला फैट होता है. In India, only 1.34% of newly tested processed food samples shows more than the permissible levels of ingredients. Cited pan-India survey results, right? India has mandated to reduce the limit of industrial produced trans fats to 2% in order to make India free from industrial produced trans fats by 2022, 1 year ahead of WHO guidelines. ये important है. Trans fat is considered as a worst type of fat. Unlike other dietary fats, trans fats or trans fatty acids increases bad cholesterol, lowers the good cholesterol. A diet comprising of trans fat increases the risk of heart disease. Okay. A National Institutional Ranking Framework, that is NIRF 2021, IIT Madras has topped the list in engineering category. IIT Madras also topped the list in overall category. This overall category thing is very, very important for the things that you can check. Moving on, according to, we are on the last page. Yes, it is done. How are you guys feeling? Please like the video. Like कर देना यार सब. कितने लोगों ने like किया है इससे पहले कि मैं ख़त्म करूँ.
0 आ रहा है मुझे पता है तुम लोगों ने लाइक कर दिया होगा, मुझे नहीं आ रहा। अभी कहाँ जा रहे हो, पढ़ कर जाओ ये सारा। अकॉर्डिंग टू रियल स्टेट कंसल्टेंट कुशमैन एम्प, वेकफील्ड इंडिया हैज़ ओवरटेकन द यूनाइटेड स्टेट्स टू बिकम सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन इंटरनेशनली। ठीक है ना, तो इंडिया ने क्या लिया, मतलब अट्रैक्ट किया है मैन्युफैक्चरर्स को, इंडिया बन गई है ये डेस्टिनेशन। लोग हमारे यहाँ पर आकर क्या करना चाहते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं होती, डेस्टिनेशन मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। ठीक है ना, हमारे यहाँ आकर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। सिप्री रिपोर्ट फॉर आर्म स्पेंडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, मतलब इंडिया द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग इन द वर्ल्ड आर यू स्पेंडर्स, कौन है सबसे ज़्यादा पैसा कौन खर्चता है मिलिट्री पर, कौन आर्म्स के ऊपर। ठीक है, यूएसए, फिर चाइना और फिर इंडिया। फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन, फर्स्ट पे निर्मला सीतारमन, सेकंड पे नीता अंबानी। ठीक है, यूएससीसी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इंडिया 43, ग्लोबल पीस इंडेक्स मोस्ट पीसफुल नेशन आइसलैंड इंडिया का 135। इसी से हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कॉमेंट करना कि आपको और वीडियोज़ चाहिए, अगर चाहिए तो कौन सी वाली चाहिए। आई विल ट्राई टू ब्रिंग द सेशन विद इन 1 to 2 days ओनली। ठीक है, चलो ओके बाय, टेक केयर, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।